और इसमें अभी जैसे तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो गए और रिज़ल्ट आने तक, तो एग्ज़ाम के लास्ट डे से लेके रिज़ल्ट तक कितना 1.5 2 मंथ्स का टाइम होगा? 45 days. हाँ, 1.5 मंथ्स। तो इसमें क्या क्या किया, और इसको मतलब डिड यू गाइज लाइक डू समथिंग, ऐसे कुछ प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया, मस्ती किया, क्या किया 1.5 महीना? Office, yeah. बस वही किया और और उसके अलावा? नहीं, because it is hectic life in consulting, तो बहुत सारा I used to be working only mostly late nights वगैरह होता था, and then because लेट नाइट्स मतलब कितना लेट? see कुछ weeks 2-3 weeks I was coming hostel around 1-2 a.m. भी ये तो पार्टी करने के बाद ना। नहीं, कभी कभी आफ्टर वर्क, कभी कभी 1-2 द पार्टी that depending on time and situation, कभी ऑफिसर कम है, कभी ज्यादा है, that used to happen. And because I had to come back, मतलब after result 2 दिन में मैं फिर से आ गया था, तो अंदर कोई ट्रिप पे जा पाया ऐसा कुछ. I was trying to go, एक वीकेंड पे I went to a small trip, नासिक एंड ऑल गया था मैं. ओ नासिक। हाँ, नासिक और त्र्यंबकेश्वर. हाँ, so I went there थोड़ा सा एक वीकेंड, उसके अलावा तो टाइम नहीं मिला. अच्छा, बोलो. एग्जाम खत्म होते ही मैं तो इंस्टा डाउनलोड की सबसे पहले, इंस्टा स्नैपचैट, लाइक लिटरली आई वाज इन द कार एंड लाइक कि चलो अभी लेट्स बी बैक ऑन सोशल मीडिया. एंड आई ट्राइड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं आगे, व्हाट आर द वर्क दे आर डूइंग. मेरे को मतलब ये था कि मैं क्लियर रहूं कि क्या करना है आगे लाइफ में. बट देन मेरे को ये समझ आया कि मैं और कंफ्यूज ही हो रही हूँ लोगों का बात सुन के, तो एक बार रुक जाती हूँ इसमें, तो ये सब नहीं करती हूँ. And then I met a lot of people. I came back to Mumbai and office resume किया, but then I made sure कि office खत्म होते ही, like my office is in Andheri, कहीं ना कहीं मैं जाऊँ. Like I met Rajan also once. I met my school friends here. Maybe people who have shifted from Kolkata here. Reconnected with a lot of people here, and then attended concerts, parties. ये सब. वाओ, तो मेट राजन एज इन यू गाइज नो ईच अदर पहले से ही? Yeah, we were inter-rankers, no? So we met first time in Delhi function. Then Sri Lanka also, we went together for 5-6 days. तो कुछ बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ श्रीलंका कॉन्फ्रेंस Rajan will go first. बताओ। नहीं, we used to bully her for her हिंदी, तो ये मैं को हम बोलती है कोलकाता से? कोलकाता साइड. No, Guwahati, not East. कोलकाता में भी ऐसे ही बोलते हाँ, हैं? तो यार हम बोलती थी. तो Hector AR3 is also a ranker now, तो he used to bully her and I used to add it. उसका क्या रैंक है वैसे तो अभी he got 29. 20. So that used to happen, and so first of all, when I went for Sri Lanka conference, because there are 2-3 rankers and then the national talent के winners and all होते हैं. So जो debate competitions, eruditions इन सबके winners होते हैं, international conference, paper presenters and all are there. So I was like, these people are somewhat different. They are artistically very good. Maybe we are intellectually somewhat good, but they are artistically very good people. So in the first day, I was like, okay, this is very different crowd I am being with. But in the fifth day, the kind of fun we did, हमने लिटरली ऐसा हॉल होता है उसमें सबने गंदे बिछा दिए थे, हम वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये सब चीजें. We made Rajan dance on Sheila Ki Jawani. वाओ, Yeah, I I had was one. bullied. यू डांस्ड ऑन शीला की जवानी? I was bullied. I was. Okay, show us how did you dance? Oh, I have load here. We have the song. No, I'll play the song. My name is This Sheila. is not happening. This is not happening. It was a very good trip because पहले तो किसी को जानते नहीं थे. Rajan and Kunal, like the ARC, we had just met once in the Delhi function and शायद कॉल्स पे एक दो बार बात की होगी. And बाकी लोगों को तो जानते ही नहीं, तो it was मतलब थोड़ा सा scary था कि we are going with unknown people. But I think first day में ही realize हो गया था कि मतलब it would be the best trip. Like बहुत ही ज़्यादा fun किया. Plus the Sri Lanka CA team also, they were very very warm, like बहुत ही ज़्यादा warm थे, बहुत ही ज़्यादा helpful थे, and they also had a lot of fun with us. Plus we had this one guy from a particular country. उसके साथ हमने बहुत मजे किए. क्या elaborate more on that? I think we should not elaborate more on that. He was from Pakistan, so good guy, politically very strong family. Very So strong. I have some risk of my life if I speak of it. So I think we should not. But what kind of fun you guys had with him? So we are like, I and him had quite of interaction because I put this Tilak and all. So he used to ask me what is the relevance of this. So you put this like, Mostly I do it 99% of the time. And I, spoke of him of the relevance and all. So there was kind of coldness between us. So one thing that very good that happened when I went to Nepal, the Nepal conference also out there. And he again came from Pakistan for that. So we are playing a card game. And in that one of the जो इंडिया से एक और लकी थी, she was with us. तो उसका और वो पाकिस्तान के बंदे का थोड़ा सा काइंड ऑफ झगड़ा हो गया था, the rules of that game.
तो उस टाइम कोल्डनेस, प्रॉपर कोल्डनेस था, एंड एट द एंड ऑफ द गेम हम दोनों ही बचे थे, so either of us would lose and जो बचा है वो जीत गया ऐसा. तो I won and मेरा चार्जर पे मेरा मोबाइल लगा हुआ था, and that was mostly the first game also, the first game we were playing and it was late in the night. So I won and I'm like चार्जर ऐसा निकाला मैंने, I'm like आज के लिए बहुत हो गया, and I think it was very proud moment कि हाँ मैंने इसको हाथ किया. तो ये बहुत अच्छा था because श्रीलंका में उसने we had coldness and then फिर नेपाल में जाके मैंने उसको हराया था, I was like मजा आ गया. वाह, तुम लोगों ने तो काफ़ी मज़े किए, मस्ती की है लाइफ में. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.